कल्याण भाई साहब, मुझे यस। एक बात हाँ जी। पूछनी है कि इसका मतलब, वैसे तो वो हमें पता भी है, अब आप कहें तो, कि हमें जजमेंटल नहीं होना है हर छोटी छोटी चीज के बारे में। जैसे एक जनरली क्या होता है, हम कहते हैं ये अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है, या है ना। तो हम्म। ऑब्जर्विंग मीन्स जस्ट टू ऑब्जर्व कि बस ये है, ऐसी हाँ है, हाँ, तो अच्छी इस, है बुरी है नहीं, बस ये चीज है ऐसी। यस यस, सो इसके लिए ना, व्हाट इज जजमेंट? if we try and understand what is judgment, then हमें दिखने लगेगा जजमेंट का लिमिटेशन क्या है। हम्म जजमेंट का मतलब तो किसी चीज के बारे में कंक्लूड करना, किसी भी हम्म चीज के बारे में कंक्लूड करना। हम्म और हम्म कंक्लूड करने का बेसिस क्या होता है? हमारा जो विंडो है, देखने का विंडो, सच देखने का जो विंडो है, वो बहुत छोटा सा है। हाँ अगर आप सिर्फ लाइट का ही एग्जाम्पल ले लें, तो लाइट हम विबजियोर के अलावा कुछ देख नहीं पाते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सात ही रंग हमें दिखता है। और ये सात रंग के अलावा भी बहुत सारे रंग है जो हमें नहीं दिखता है। और वो क्वाइट अनलिमिटेड है, अनटिन नंबर्स है। तो हमें विंडो ही छोटा है हमारे पास। उस विंडो के दायरे से जो देखें हैं, वो तो एक छोटा हिस्सा ही दिखेगा हमें। हमें तो पूरा दिख नहीं सकता कभी भी, कितना भी ताकतवर हम हो जाए। इसको समझ पा रहे हैं क्या अंजू जी? हाँ आपका जी, अब वीडियो आया है, थोड़ा, वो शायद हाँ, नेटवर्क का आपका इशू हो आपका गया। नेटवर्क थोड़ा सही हाँ है। तो हाँ ये जो हमारे देखने का जो विंडो है, ये एक छोटा सा विंडो है। उसके अंदर से हम देख रहे हैं, सच को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सच के बारे में एक डिसीजन दे रहे हैं, एक कंक्लूजन दे रहे हैं। हाँ अब समझ पा रहे हो कितना लिमिटेड काम कर रहे हैं हम? हाँ तो हाँ। जजमेंट तो वही है ना, जजमेंट या तो वही है जैसे ना। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये परसेप्शन है, तो एक्चुअली आजकल मुझे फ्रूट्स पे तो बहुत लगने लग गया कि सब कुछ ना एक परसेप्शन है। ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये उस छोटी सी विंडो में से एक परसेप्शन ही तो है कि हमें ये ऐसा लग रहा है। हम्म। वो जैसा है जो वैसा है, यस 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 हमें यस क्या लग रहा है, दैट इज जस्ट परसेप्शन कह लीजिए उसे। यस वही हो गया ना कि एक छोटी विंडो में से हमें अपनी समझ की एक छोटी विंडो में से वो चीज ऐसे दिख रही यस यस। तो है ये ना। जो हमें जो दिख रही है, इसको जब हम हम्म क्वेश्चन करते हैं, हम्म वही ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी होता है। ओके। हमें जो दिख रही है, उसको भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वही होता है इंक्वायरी, वही है ऑब्जर्वेशन। तो उसमें क्या है, आप जजमेंट का फिर कोई अवकाश ही नहीं है। आप जजमेंट करोगे कैसे? क्योंकि आप रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो ना। आप तो और गहरा जा रहे हो, और गहरा जा रहे हो, और लेयर बाय लेयर आप अंदर जाए जा रहे हो, डीपली जाए जा रहे हो। तो फिर आप जजमेंट का, फिर आपको नॉन जजमेंटल होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। वो फिर फेकिंग हो जाएगा, वो आप एक्टिंग करोगे जो नॉन नॉन जजमेंटल हो, आप इक्विनोमस हो। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, इक्वानिमिटी इज अ बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ओके, ऑब्जर्वेशन, इन द प्रोसेस ऑफ ठीक है। इंक्वायरी। वो आपका हम्म। गोल नहीं है। हम्म और हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में ना ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे आप देखिए, हम्म ये फ्रूट के मामले में, एक तो आप फ्रूट को आप ऐसे देखो जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो भाई हमें फ्रूट ही खाना है, ये प्रेस्क्रिप्शन दे हम्म दिया गया है। और हम्म दूसरा है, आप ये क्वेश्चनिंग मोड में हो, जो मैं अभी इस समय क्या खा सकती हूँ, मुझे भूख लगा है। ओके। हर एक बार, बार बार जब खाने के लिए बैठो, तब अगर ये क्वेश्चनिंग मोड से बैठो, जब मुझे भूख लगा है, यानी कि न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है, नरिशमेंट का रिक्वायरमेंट है बॉडी में। और ये हम्म नरिशमेंट का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा ना, कोई स्वादिष्ट चीज मुझे कंज्यूम करना है, और वो स्वादिष्ट चीज उस नरिशमेंट का आइडेंटिफिकेशन है। अगर स्वादिष्ट है तो नरिशमेंट है,
यानी कि स्वाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो स्वादिष्ट ना हो तो फिर नरिशमेंट नहीं है। ओके। तो अभी जाके क्वेश्चन आता है, जो वो स्वाद जो है वो बनावटी है या प्राकृतिक है। ओके। क्योंकि अगर बनावटी स्वाद ले रहे हैं तो फिर बनावटी नरिशमेंट मिल रहा है। ये दिस इज वेरी सीरियस गेम। इसको हम इंसान ने एंटरटेनमेंट बना दिया। ईटिंग बिकम्स एन एंटरटेनमेंट, बट ईटिंग इज एक्चुअली अ सीरियस बिजनेस, जिसमें हमें नरिशमेंट मिल रहा है, लाइफ के लिए नरिशमेंट मिल रहा है। और वो नरिशमेंट का आइडेंटिफिकेशन है टेस्ट। और अगर वो टेस्ट हम मॉडिफाई कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बना रहे हैं, तो फिर हम नरिशमेंट से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सो दिस एस्पेक्ट्स नीड टू बी understood at the depth. Pooja was laughing. You were smiling for some reason. Yeah, because these are when you said entertainment, like my mom gets really annoyed by me when like I have this habit of when I'm eating, I want to watch TV and eat. Others I won't. So I was just laughing on that. You do that today. Now also you do that. Like normally kids do that. We have watched kids doing that, but you also do that often. Yeah, I still do it. So mom is like, mom always gets angry, like, you know, like you need to focus on your food. You like stop watching. Uske baad jitna dekhna hai dekh, but they're not like while eating. So that was the same thing when he said entertainment. Mom bolte hai ki tera khana nahi, tera entertainment chalte rehta hai. So that's how I could relate. But on a serious note, this is a serious business, because for life food is very essential, right? Yeah. Food is not a matter of joke. Food is very essential thing for a process of living, because nourishment is the primary requirement for the body to grow and progress, to live. Now if we compromise on the nourishment, then we are compromising on the quality of life. Can you understand that at the depth? Because you are in that age right now. You are no more a kid who will not be able to understand the things at the depth. You are capable of going deep and understanding the things right now. Physically, you are capable, unless you ignore it. Unless you ignore your capability, you have that capability right now, isn't it? What do you think? So that is why when you raise the topic of emotional eating, we were trying to understand that it is not only emotional eating, but it is there in the school example. The school example that in the previous session you mentioned about the school example. So you had some judgment about the school, and now you are being judged, you sensed those all things. So these are the same reflection which is coming up, quite similar to the emotional eating aspect. Yeah. Binal, will you please continue for a couple of minutes? I'll just come back. Yeah. Thank you. Actually, Anjuji, I could relate to what you were saying. I had gone for quite a while, perhaps almost 2 months on fruits, and then this whole urge and craving for having जो भी cravings है वो आ रहे थे. और एक था कि ये कंपैरिजन ऑल्सो कि वो फेज में कैसे हुआ कि मैं खा पाई और अभी क्यों नहीं हो रहा. तो ये कंपैरिजन को भी क्वेश्चन करना, शायद अगर आप में भी आई डोंट नो होता होगा कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, पहले क्यों होता था इजीली. तो शायद वो कंपैरिजन भी हमारा ही यार्डस्टिक है जो हमने, और हम पे वो दबाव लाता है. तो क्या हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं? मुझे पता नहीं आपके केस में कैसा हुआ करता था और अभी कैसा आप कर रहे हो, लेकिन एक मेरे लिए कॉमन था. एंड व्हाट डू यू थिंक अंजू जी, क्या आप में आता है ये ऐसा?
अंजू जी आप है? Pooja, could you connect the dots between the emotional eating part and the one where the school example was given? Do you see some, common patterns between the two about which Kalyan was mentioning about? I'm still trying to honestly reflect. I'm still trying to reflect on the point. But yeah, even, like somewhere or the other, I feel that even like, as in like, when, like at times I really need, so it's like during the day, I don't watch television or anything. And if I get, like sometime like while eating, while eating, sometime I get, like, when I get some free time to watch television and eat, that's what I try to do, because like, I mean, I have, when I have usually people to talk to, then I don't use media. But then, when I'm like, I don't have anyone to talk or something, and if I'm alone, then I tend to turn towards the television or the phone, that you can say. And not only like watching something, but, just busy on networking sites and all that stuff. But, that's what I felt, that after leaving school, somewhere or the other, when I said that I don't have friends, because homeschooling made it really difficult for me to actually find friends. So like, I tried to get into some communities, which was also a bit difficult task to get in, because this all happened during the pandemic. And plus pandemic itself, like I have always been an outdoor kid. And when pandemic came, it forced everyone to be at home. So that's also something where, that the frustration that you weren't able to go out of your home just to, feel the environment outside. I think that's also somewhere where sometimes I used to start eating emotionally. Like I used to always, I used to turn on to sweets, like kuch bhi hota tha, I used to just go for sweets, like not the healthy stuff, but then just junk. That's what you can say. But slowly now it's dying down, because I'm not an emotional eater anymore. But then I still see like a lot of people in my neighbors itself, like, they're sad, and I see, popcorns, big boxes, they come and, they cook at home and they start eating all that, while even watching, like, that binge eating while watching TV or something. But now, because when you become productive, I think that's when you can actually let go of all those unhealthy eating patterns, that you can say. So, one thing that's, I was just listening to what you were saying. Could it be that, for example, that you don't end up watching TV if you have, company and people to talk around? But even if they're not there, so is it becoming like an escape route of sorts? To this bit of it, that even if, say, for example, there's no one, or so we end up in the justifying mode of, if this is not there, that's why I end up doing. So in a way, kind of advocating our own set of preferences that we have. So the proposal is, can we question our own preferences? May it be watching TV, or it could be for a food, or it could be even how others are perceiving us. So at various levels, even I think on the point that you mentioned, there's this frustration with the pandemic that came about of staying indoors, for example. This frustration, how does that happen? I mean, because we have certain image in our mind that it should be a certain way, and the reality is quite different from there. So maybe that parameter that somewhere we have set for ourselves, if we can question that, because if not for that parameter, things are okay as is, with what is. There's no comparison between the image that you built and what the actual
reality that's unfolding. So that mismatch is what creates that conflict. So maybe if we could, in that sense, think. Any reflections coming up, Pooja? Yeah. One thing I'm able to understand, which is just like I am into improvisation, and after joining those improvisation, it's been like 2 years now. And after that, like I have street cats. I mean, I enjoy making, I love animals, like, and it was one of my long-term goals to open an animal shelter, but it's still way far. But like I have a street cat, like there are 2 to 3 cats that come to my place every day. But it's like I don't think about them, kab aayenge. They'll come on their own when they have to. And when they come, then I enjoy playing with them, and I enjoy, giving them food and loving them and all that stuff. So I'm just living the moment rather. Yeah. Not thinking about the past or the future. I'm just in the moment. Because, like, just being there. Yeah. And would you be disturbed if they don't turn up for in their usual time, or maybe for a few days they don't turn up? How would you? Yes, I would be upset, only just because for me, like, their health is something that matters for me. Because like these are street cats, they just go to the dustbins and eat whatever they find, and I don't want that. I want them to be healthy enough. But there's not like a like physical attraction towards them that now I want them to be with me itself. Like it's just that you're taking care of them, when you don't have to be with your bacha every day. But then, like, you don't want to see them for 24 hours. Like sometimes you just want to keep a check on them, if they're safe, did they eat their food, are they healthy, are they happy, that's all. So for me, that's the same thing. Like even if they don't come regularly, but then I just want to make sure that they're healthy and they're safe. So it won't disturb me if they don't come for like 1 or 2 days. But then, yeah, after the 3rd day, it might make me worried, like, are they eating healthy or not? Yeah. कल्याण भाई साहब, मुझे एक बात पूछनी है कि Yeah. जैसे जब से मैंने खुद फ्रूट डाइट शुरू की और जो भी ये मतलब चेंज हुआ, जैसे समझा इस बात को, तो मैंने तो बिल्कुल एनिमल्स को खाना देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हम उन्हें कितना अननेचुरल फूड दे रहे थे। जैसे हमारे घर में गऊ की रोटी बनती थी, तो वो बंद कर दी बनानी, क्योंकि जब हम ही को फूड हमारे लिए नहीं बना तो एनिमल्स के लिए भी नहीं बना। तो अब कैसे उनकी केयर करें? सपोज मतलब ऐसे मुझे ज्यादा इंस्टिंक्ट आती भी नहीं उनकी केयर करने की, क्योंकि मुझे लगता है यूनिवर्स अपने आप कर रहे हैं उनके लिए। पेट्स है या ऐसे स्ट्रीट डॉग्स? नहीं है मेरे पास, मुझे कभी भी पेट्स के फेवर में मैं थी नहीं। स्ट्रीट डॉग्स हैं, जैसे कैट आके बैठ जाती है हमारे यहाँ पार्किंग में कई बार। तो मतलब पूछ रही हूँ, जैसे लोग केयर करते हैं, तो हाउ शुड आई केयर फॉर एनिमल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, ये जो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ लेते हैं ना, जो उनका खाना देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, ये एक कल्पना है। हाँ हाँ, ये एक कल्पना का बोझ हम खुद पे डालते हैं, और उनका जो नेचुरल कैपेबिलिटीज है, इसको भी कंप्रोमाइज कर बैठते हैं। हाँ, आई एग्री। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कैट्स को अपना घर का बनाया हुआ खाना दे रहे हो, दूध पिला रहे हो, तो उसका जो नेचुरल रैट कैप्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है, क्योंकि दे बिकम डिपेंडेंट ऑन योर फीडिंग। ये भीख देने जैसा जुर्म है। भीख देने से हम क्या करते हैं? भीख देने से तो हम पाहेजी कर रहे हैं ना उनको। आई एग्री। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वी आर मेकिंग देम हैंडीकैप्ड। तो
इसका अगर डेप्थ अगर दिख जाए तो फिर हमें तो वो कोई गिल्ट भी नहीं आएगा। और मतलब जब हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्पना करेंगे तो फिर गिल्ट के नाम का भी एक चीज आएगा जब आप कर नहीं पाओगे, जो आप शायद वही डिस्कस कर रहे हो, जे नहीं, गिल्ट भी मुझे गिल्ट भी नहीं। नहीं आता, बट जैसे फिर भी बस थोड़ा सा इंक्वायरिंग आती है माइंड में कि भाई और लोग कुछ कर रहे हैं हम्म, सपोज। हम्म, हालांकि मैंने आपको कहा मुझे नेचुरल इंस्टिंक्ट ही नहीं है कि मुझे यही आता है कि यूनिवर्स अपने आप इनका भी करेगा, जब इनको भी कैपेबल बनाया है, सेल्फ सस्टेनेबल है, ये भी कर लेंगे, अपना हम्म। खाना ढूंढ लेंगे। बट जैसे अभी सुनते हैं कई बार कई लोगों का, तो थोड़ा सा आता है कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, बस थोड़ा सा। अगर अगर इसको इस तरह से देखें, जे उस मोमेंट में अगर कुछ हो गया मेरे से, मान लीजिए आपके सामने कोई मर रहा है और आपके पास रोटी पड़ा हुआ है, बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ है, तो आप आखिरकार दे ही दोगे शायद। जब आपको अगर ऐसा कनेक्ट हो जाए जो ये बिस्किट उसका जान बचा देगा, तो आप यू एंड अप शेयरिंग दैट। तो उसको रेस्ट्रिक्ट ना करते हुए भी हम चीजों को देख सकते हैं, जो उस मोमेंट में क्या हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, उसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये ज्यादा मैटर करता ठीक है। है ना। आई मिस्ड सम पोर्शन, पता नहीं मतलब क्या डिस्कशन हो रहा था, ये पेट के अराउंड ही डिस्कशन हो रहा, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। हाँ, पूजा कुछ कैट्स की केयर करती है, कुछ ऐसा बता रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप But then वो तो फिर तो even we take care of our own बच्चास, then why do we feed them? Like if they have the capabilities to grow up and earn money for their own, like how it happens in abroad, ki usually kids leave their houses and tend to make life for their own. So yes, I agree that cats, they छूट जाता है वो instincts of catching the rats, but even humans are very intelligent to make a life of their own. So why do we feed our own kids and take care of them? see, feeding our own kid is somewhat very instinctive for parents basically, or primary caregiver, because we actually connect with them so closely physically. So feeding them is a kind of feeding ourselves till they become physically matured. After they become physically matured, feeding them is actually a burden. Let them take care of themselves. It's not about taking care of themselves through the money. It's not about that, but to cook for them, to arrange the fruits if they are on fruits, then provisioning the fruits, cutting, chopping them. These are not needed. If they're physically matured, grown up, they can take care of these all things. So if we continue even taking care of our children after they grow up, like you are being taken care of, this is somewhat, I think, making you handicapped without knowing. It might be looked at love from your mother, but the things could be looked at little deeper, and you can take care of yourself. You are capable of doing that. That's what is the inquiring discussion was also there, that when you are capable of inquiring, why not to inquire? Similarly, you are physically grown up, you can feed yourself. You can also understand the fact that eating and watching TV, when I club, then I compromise the quality of both. Neither the watching TV is of high quality nor the eating is high quality. Both qualities are compromised. So those can be looked at if you are interested. नहीं, क्या लग रहा है? आईना दिख रहा है क्या थोड़ा सा? आईना दिख जाए तो बहुत असर करता है, क्योंकि हम वही आईना ही देखते नहीं है, खुद को देखते नहीं है। बाकी सब बैठ के इंक्वायरी के नाम पे बाकी सारे क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट खुद का जो चीजें हैं
वो अगर दिख जाए ना तो फर्स्ट क्लैरिटी वहीं से आता है शायद। अंजलि, प्रोजेक्ट था, कुछ कंट्रीब्यूट करो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया। सर क्या बोल रहे थे आप? कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, आप सुन रहे थे डिस्कशन? नॉट फुल्ली प्रेजेंट बट यस। हाय शंकर, हेलो Alex also has joined. सर ये हेलो। हाँ प्रोजेक्टा। हेलो। यस प्रोजेक्टा। हाँ, तो अभी ये पेट्स घर हाँ में है, हम लोग के नहीं लाने के ही नहीं, ऐसे आप बोल रहे हैं मैं पेट्स को घर पे लाना ही नहीं चाहिए? नहीं, लाना चाहिए या नहीं चाहिए ये तो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो पेट्स को जो फीडिंग का, जो पेट्स फीडिंग का, एनिमल फीडिंग का जो हम आदत डाले हैं, इससे कहीं ना कहीं, कैन यू हियर? कैन यू हियर मी? यस Yeah. यस। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं टू बिगिन विद। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस चीज को, इफ वी आर फीडिंग एनिमल then what is happening probably. So there is a possibility of handicapping the natural capability of the animals to get their food themselves. Do we see that or not? After that, whatever I am doing at that particular moment, that's an irrespective of things. Like that's nowhere concerned with this discussion. We are not criticizing that. We are not here to criticize any act. We are trying to understand the very depth of the act. What is the impact of that act? But then even pets are something like, even if you adopt a pet and like, how we have humans at home. I had a cat. I mean, I rescued and I adopted a cat. And he was there for me like for a really long time. And then, I used to not eat until unless he ate. So that's what even our humans do. That जब तक मेरा बच्चा नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी. तो मेरे लिए वही था. I mean, my pet was like my own baby for me. वो नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी. जब तक वो खाएगा फिर मैं खाऊंगी. So it's like that, like you're not yes, you are not giving them the freedom to go around and look for their own food, but then you're actually just protecting them and taking care of them and their health, right? Yeah. मतलब So- अगर वो हमारे घर पे ही हो for 24 hours, not like a street, but our own adopted one. नहीं, पहले तो the first argument that you brought in, that mothers don't eat till they feed their children. Can we look at that aspect little deep? What is the rationale of eating? Rationale of eating is hunger, right? Hunger is the reason for eating, to nourish the body. How is it connected to feeding your child and then eating? This connection is made out of an attachment, which is the psychological fixation. Cannot be justified. Can you justify that? Like you started proposing this example and then connecting the attachment towards pet. So one attachment is being justified because of another attachment. Are we able to see this? The first place, the mother's doing this is doing injustice to her own body. Do you see that? If the mother is
hungry, why she will not eat? What is the fixation she is undergoing? This cannot be love. This cannot be claimed as love. This is an attachment one is suffering from. It is also called obsessive compulsive disorder, OCD. Attachment is a psychological disorder. Do we see that, or just for the sake of nodding, you are nodding that okay, I cannot argue. So disagree No, with that it. makes sense. That makes sense. No, that makes sense. He like they're not yeah, that's an attraction, and yeah, I understand your point. Yeah, Prajakta. So actually what we need to look at is the aspect of, yeah, Shankar, you want to say something? Yeah, can I please get in? Yeah, please. This attachment Yes. is very natural. Over attachment can be termed. Anything over. What is an attachment? Let's dive Attachment deep into yeah, understanding of, attachment is yes. if you react to any perception, that is attachment. No, reaction is an action. Attachment is necessarily a physiological sensation. Yeah. So unless you attach Hmm. to any perception, any Yes. thought, Yes. you cannot act upon it. You cannot act. You cannot act physically. It is just the reaction of some thought in the process of work. That is attachment. That is the link between the thought and the action. And this attachment can be controlled by oneself, by anybody. If I want to get attached to any thought or don't want to get attached to any thought, that is one's will. So what I mean to say is attachment is very natural, but over attachment, if it becomes obsessive, then it is something to worry about. Yeah, you want to add something more? Nothing more. Thanks. Right. So now what Shankar proposed is that a little bit of attachment is okay. Over attachment is a problem. What he is proposing. Now, if we look at the very framework of an attachment, now attachment is a physiological sensation. There is a change in the blood flow. There is a change in the heartbeat. When we are attached to something, there is a change in our heartbeats, in the breathing pattern. So it's a physiological change that we experience when we experience attachment, be it less attached or more attached, as Shankar was mentioning. The framework is same. Attachment is basically a sensation, and the base of that sensation is some or other preconditioned thought, some image in the mind which actually triggers this sensation. It's a kind of conclusion that we make of our perception, that this child is my product. I must take care of it. I am the savior of this child. These are few examples of those images. There could be many examples, we can list it. But some or other consideration that is concluded in the mind that creates that sensation. Can you understand this? Anyone wants to add something?
or disagreeing to this? The understanding of attachment? Sir, एक बार repeat कर दीजिए. The attachment is basically a physiological sensation sensed based on some image in the mind, and the examples of those images could be, I have to be savior of this child. If I don't take care of this child will die. And the child is my product. These are few images, examples of the images. Based on that, one starts sensing some sensations. Perfect, sir, perfect. So now this particular sensation is created out of an imagination in the mind. Now this imagination based sensation is not a real sensation that we are sensing. It may happen within the body, but it is not a real thing. The source is not real. It is an imaginary burden that we are putting onto our body. Now I'm questioning Sankar's proposal that limited attachment is natural, more attachment is a problematic. Let's rejoin and continue our inquiry for the last session of the day.